बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी F.Sc पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान M.N.A. गुम्मन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा ये जो मवाद है ये पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा मुफीद है। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल M.N.A. गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, बढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले तो शार्ट क्वेश्चन आंसर्स यूनिट 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। नंबर 2, हाउ डज थ्योरी डिफर फ्रॉम लॉ। व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। What is hydroponic technique? Give its importance. Write a note on vaccination. Define biome with example. यूनिट 2 के शार्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड। Define lipids, give two rules of waxes. Differentiate between saturated and unsaturated fatty acids. Give structure of lecithin. उसके बाद बारी है जी यूनिट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस की। What is the active site of an enzyme? Differentiate between apoenzyme and haloenzyme. What are cofactors and activators of enzyme? How does an enzyme accelerates a metabolic reaction? Write 4 characteristics of enzymes. What is induced fit model? Who proposed this model? How does high temperature affect enzyme activities? What is the role of pH in enzyme action? Give optimum pH values for any two enzyme actions. उसके बाद यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है। राइट डाउन सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। डिफरेंशिएट बिटवीन phagocytosis and pinocytosis. Give chemical composition of primary and secondary cell wall. Give 3 functions of smooth endoplasmic reticulum. Define storage disease with 2 examples. What is location of centrioles in the cell and what is their role? Differentiate between chromoplast and leucoplast. उसके बाद बारी है जी यूनिट 5 की। डिफाइन स्पीशीज एंड वायरोलॉजी विद एग्जांपल्स। गिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर? व्हाट आर टू रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर? व्हाट आर prions? Differentiate between lytic phase and lysogenic phase. Write down symptoms and preventions of hepatitis. यूनिट 6 के शार्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जी। राइट 4 postulates ऑफ जर्म थ्योरी। व्हाट आर mesosomes? Describe their functions. Right misuse of antibiotics. What are trichomes? Gives the structure and functions of heterocysts. What are super blue green algae? Give its importance. उसके बाद यूनिट 7 की बारी है जी। व्हाट आर कैनोफ्लैगेट्स और व्हाट आर ट्राइकोनोमेफ्स? गिव देयर इम्पोर्टेंस। ये प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। राइट 2 characteristics of ciliates. Differentiate between micronucleus and macronucleus. Differentiate between foraminiferous and actinopods. What are epicomplexans? Give one example. How algae differ from plants? What are red tides? Give structure and functions of diatoms. Also write 3 characteristics of diatoms. What are kelps? Name the parts of thallus of a kelp. यूनिट 8 की बारी है जी। व्हाट आर लिकन्स? गिव देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी। डिफरेंशिएट बिटवीन रस्ट एंड स्मर्ट्स। व्हाट इज बर्डिंग एंड पैरासेक्सुअलिटी? व्हाट आर टोड स्टोल्स? गिव एग्जांपल। What is histoplasmosis? Give its causes. Give scientific name of yeast used in genetic research. Define hyphae. Give their 2 types. उसके बाद है जी व्हाट इज़ माइकोरिज़ा? गिव इट्स इम्पोर्टेंस। यूनिट 9 की तरफ बढ़ते हैं। Why bryophytes plants are called amphibious plants? How spores of mosses differ from spores of liverworts?
What is alternation of generation? Give it significance. Why why sphinocida are called arthrophytes? Differentiate between microphiles and megaphils. Define double fertilization in angiosperms. Give its importance. उसके बाद बारी है जी यूनिट 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की. राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्ज. डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल. राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल्स. डिफरेंशिएट बिटवीन infestations and disinfestations. Write names and uses of any two useful insects. Define names and metamorphosis. Give three characteristics of chordates. Give the role of swim bladder in bony fishes. Give two commercial importance of sharks. Define regeneration and मेड्रोपोराइट. उसके बाद यूनिट 11 की बारी है. डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स. डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. Define photosynthesis with the equation. What is compensation point? Where it occurs? Write down the molecular formula for chlorophyll A and B. What are necessary pigments in plants? Give their importance. Differentiate between absorption and action spectrum. यूनिट 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशंस. राइट कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ saliva. Name various types of salivary gland in man. Differentiate between peristalsis and antiperistalsis. How hunger pangs are caused. What is heartburn or pyrosis? Name types of cells present in gastric glands. What prevents the wall of stomach from being digested? यूनिट 13 की बारी है जी. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिज्मिक एंड सेलुलर respiration. How air is better respiratory medium than water. What is photo respiration? Name organelles involved in it. Write the name of its products. उसके बाद है जी व्हाट इज रूबिस्को. राइट इट्स इंपॉर्टेंस. डिफाइन रेस्पिरेटरी सरफेस. गिव थ्री प्रॉपर्टीज. डिफरेंशिएट बिटवीन cutaneous and pulmonary respiration in frog. What are counter current exchange and parabronchi? Differentiate between diaphragm and pleura. नंबर यूनिट 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है जी. डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर पोटेंशियल एंड सल्यूट पोटेंशियल. डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोलिसिस एंड deplasmolysis. Differentiate between apoplast and symplast pathway. Differentiate between single and double circuit heart. What are blue babies? What is brain hemorrhage? Give its two preventive measures. जी ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. उसके बाद अब बारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की. ये जो पूरी बुक में से दिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पेपर के हिसाब से, तो आपने ये तैयार करने हैं. हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड मैनकाइंड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड. डिफाइन क्लोनिंग. डिस्कस इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ लाइफ. बी पार्ट है डिस्क्राइब acetylglycerols in detail. Next question है describe primary and secondary structure of protein. B part है compare DNA and RNA. Explain different types of RNA. उसके बाद है write a note on endoplasmic reticulum. B part है जी what are plastids. Explain the structure and function of chloroplast. Next question है describe the structure and function of mitochondria. B part है differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells. Next question है describe life cycle of bacteriophage. B part है how HIV is transmitted. Give a sketch of infection cycle of HIV. Next question है define hepatitis. Describe its symptoms, causes and types. B part है जी describe different classes of bacteria on the basis of flagella. Next question है discuss the process of nutrition in bacteria. B part है describe different physical and chemical methods to control bacteria. Next question है write down characteristics of cyanobacteria. B part explain taxonomic status of fungi. Next question है discuss different methods of asexual reproduction in fungi. B part है write four economical gains and losses due to fungi. Next question है give adaptations of fungi on land. B है describe land adaptations of
ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गिव इट सिग्निफिकेंस। बी पार्ट है हाउ एवोल्यूशन ऑफ लीफ टुक प्लेस। नेक्स्ट है जी इन स्टेप्स इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन ऑफ सीड। बी पार्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा एंड डिस्क्राइब कैल्विन साइकिल इन फोटोसिंथेसिस। बी है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, स्केच इट्स वेरियस टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा स्केच एंड एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल। बी पार्ट है गिव डाइजेशन इन कॉकरोच। Next is describe digestion in oral cavity of man. B part describe absorption of digested food in small intestine. Next question है write a note on anorexia nervosa, उसके बाद है bulimia nervosa और उसके बाद है obesity. Next part है why transpiration is necessary evil. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्लड। बी पार्ट है डिस्क्राइब लिम्फेटिक सिस्टम, राइट इट्स फंक्शंस। नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन इम्यूनिटी, गिव इट्स टाइप्स। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये गेस्ट पेपर पीडीएफ में चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।